जनरल डिस्कशन चल रहा था। बहुत साल पहले मैं यात्रा करना चाहता था, बट उस टाइम कोविड आ गया, फिर थोड़ा यात्रा करना मतलब मुश्किल हो गया, तो फिर हमने उसको एक तरीके से पोस्टपोन कर दिया था। और फिर मेरी माइंड में था कि मैं पर्सनली हिंदुस्तान में पैदल चलना चाहता था, और मेरे माइंड में था। और फिर कांग्रेस पार्टी के भी 2-3 लोगों ने ये सुझाव दिया। तो अब मेरे माइंड में पहले आया या उनके माइंड में पहले आया, मालूम नहीं। आप ही के माइंड में पहले आया था? एक्चुअली सच बोलूं तो पहली बार जब मैंने ये सोचा था, मैं 25-26 साल का था। उस टाइम मैं पॉलिटिक्स में भी नहीं था, बट उस टाइम मैं नहीं कर पाया। तो मैंने सोचा कि अंदर ये डिजायर तो था, और मुझे काफी अच्छा लग रहा है। मेरे लिए ये जरूर ये बीजेपी से, आरएसएस से लड़ने का तरीका है, राजनीतिक तरीका है, और उससे कांग्रेस पार्टी को फायदा होगा। मगर मेरे लिए ये पर्सनल जर्नी भी है, तो मुझे बहुत सीखने को मिल रहा है। हिंदुस्तान के बारे में काफी समझने को मिल रहा है। जो तेलंगाना की आपने बात कही, तेलंगाना में कांग्रेस पार्टी चुनाव जीतेगी, हम मिलकर लड़ेंगे, एक साथ लड़ेंगे, और जो हमारा जो फाउंडेशनल आइडिया है, विचारधारा है, उसको डिफेंड करने के लिए लड़ेंगे। Has been done to the institutional framework of our country. There has been a systematic attack on different institutions. You in the press understand very well how the press is controlled, pressurized, threatened. Many friends of many journalists have worked with me, and they've been telling me while they've been working in Telangana exactly what is done, not just, by the way, at the national level, but also at the local level here. And the media is not the only institution that is under attack. The judiciary is under attack. Bureaucracy is under attack. And this is extremely damaging to the country. So, of course, when the Congress party comes back to power, we are going to make sure that these institutions are once again freed from the grasp of the RSS, and a certain independence is maintained in these institutions. That is our record, and that is something we will do very, very aggressively. With regards to the massive concentration of capital, if you look at what is happening to small and medium businesses in this country, what is happening to the job creation structure of this country, essentially it is being destroyed, and today India is unable to produce jobs. Huge part of the reason why this is happening is because there is massive concentration of power, crony capitalism, which the government is doing, both governments, again, the BJP government at the center and TRS government here in Andhra Pradesh, favoring 2 or 3 business people and eliminating other competition and creating monopoly in industry after industry after industry. And this is one, it's very bad because such రాజ్యాంగ వ్యవస్థలన్నింటినీ కూడా నాశనం చేసింది. అట్లనే విద్యను కాషాయీకరణ చేసింది. వనరులన్నీ ఒకరిద్దరికి దోచిపెడుతుందని మీరు ఆరోపిస్తున్నారు. 2014 ముందు ఈ వ్యవస్థలన్నీ ఎట్లా ఉండేవి, ఈ 8 ఏళ్ళు ఎట్లా ఉన్నాయి, అసలు ఇవి ఎట్లా ఉన్నాయని మీ ఆలోచన? इस नरसिम्हा रेड्डी फ्रॉम ईनाडू। इनका क्वेश्चन ये है कि मोदी 8 साल में पूरा जो डेमोक्रेटिक सेटअप को पूरा सर्वनाश कर रहा है और आगे 2 उनके दोस्तों के लिए लूट कर ये पूरा कर रहा है। उससे पहले 14 से पहले कांग्रेस कैसा था, आगे कैसे रहने वाला है?
what these questions. అంటే मोदी 8 साल से ये पूरा कॉन्स्टिट्यूशनल स्ट्रक्चर को डिमोलिश कर रहा है। हाँ, वो इसके बारे में आपका विचार क्या है? दूसरा, ये 8 साल से उनके 2 दोस्तों के लिए देश को लूट कर बांट रहा है, इसके बारे में कांग्रेस का राय क्या है? आगे आप ये पूरा सिस्टम को सुधारने के लिए आगे 2000 क्या करना चाह रहे हैं? व्हाट इज बिफोर 2014 कांग्रेस कैसे थे, आगे कैसे ले जाने वाले? First of all, I like to welcome all of you here. Thank you very much for coming. Thank you for giving me your time. With regards to the question, जब केसीआर पटना जाते हैं और एक राष्ट्रीय फ्रंट बनाने की बातें होती हैं जिसमें कि वो मुख्यमंत्री शामिल होते हैं जिनकी सरकार में आप शामिल हैं, तो ये फिर आप कहते हो कि टीआरएस कंफ्यूजन फैला रही है। क्या इन चीजों से कंफ्यूजन ही फैलता? राहुल जी, सवाल कंक्लूड कर लूं कि क्या भविष्य में 2024 में आप कहते हो कि तेलंगाना में कोई समझौता टीआरएस से नहीं होगा, क्या 24 में नौबत आएगी तो भी कांग्रेस टीआरएस के साथ कतई हाथ नहीं मिलाएगी किसी भी सूरत में? देखिए, सबसे पहले ये मैं नहीं कहता हूं, ये तेलंगाना की जो लीडरशिप है, कंबाइंड लीडरशिप है, वो कहती है। जो वो कह रहे हैं उसको कांग्रेस पार्टी एक्सेप्ट करती है और उस बेसिस पे एक्शन लेती है। नीतीश जी अगर ये टीआरएस से बातचीत करना चाहते हैं तो दैट इज हिज कंसर्न, दैट इज हिज डिजायर एंड ही वेलकम टू डू इट। बट फॉर अस, हमारे लिए तेलंगाना में वी आर वेरी क्लियर, वी कैनॉट स्टैंड विद द करप्शन, द अप्रोच एंड द एटीट्यूड ऑफ द TRS. The TRS is looting the people of Telangana. It is snatching land away from Dalits, from tribals. It is destroying the education system. It is privatizing the education system. We are diametrically opposed to everything they do. One ideology that is seeking to divide the nation, spread violence in the nation, and the other ideology that is bringing the nation together. And the line is very, very clear. I feel and the Congress party feels that it is very important that the opposition works together harmoniously to defeat the ideology of the RSS and the BJP. हाँ जी, सियासत से रियासत। मैं मोहम्मद रियाज अहमद, सियासत उर्दू डेली। Congress party is also an emotion, as taught to us by Gandhi ji. It is the opposite of fear. What is the opposite of fear? Is the confrontation of your own fear. The moment the Congress party starts to spread this idea of confront your fear, don't be a coward, because hatred is cowardice, naturally the BJP will start to collapse. Right? Of course, there is an element of institutional capture, which they have done, which the united opposition will reverse. And I also feel, and it's important that people who have played a role in this institutional capture, they realize एक विचारधारा है और एक सिंबल है, और जो बीजेपी की विचारधारा है उसके खिलाफ क्लैरिटी से एक दूसरी विचारधारा रखने का तरीका है। रास्ता लंबा है, बीजेपी से लड़ना, जो इंस्टीट्यूशनल कैप्चर इन्होंने किया है उससे लड़ना 2 मिनट का काम नहीं है, मगर भारत जोड़ो यात्रा एक बहुत अच्छा कदम है। मुंसिफ से बशीर, Obviously, it is a political action. This is not a sports yatra or
this is, of course, it is a political action. And it is a political action against the way the BJP and the RSS are dividing the country and damaging the country, spreading hatred, spreading violence. This is a completely political action. Okay? And the aim of the action is to spread the message across India that the hatred and the violence that the BJP is spreading are weakening the country. They are anti-national activities, and it is not Indian culture. Indian culture is harmonious, peaceful, affectionate. That is the idea behind the Yatra, and it is 100% political message. So you are media third and English media fourth because of the significance of the Urdu media in this region. You are free to ask your questions in Telugu. It will be translated. Having any relationship with the TRS, the Congress party has made this very clear. This confusion is created by the TRS themselves. I'll repeat it clearly, there's absolutely no question of any relationship between the TRS and the Congress. Number two, any leader has the right to imagine his party in whatever way he wants. If the Chief Minister of Telangana believes that he is running a national party, that's perfect. So what is it that is going to be done in terms of reverse set after the Bharat Jodo Yatra also? One way of looking at the BJP is that it is a political organization. That's a rather superficial way of looking at the BJP. Also acceptable, that's also fine. So these are all things that he can do and he can imagine. He's welcome to think that no, I'm running an international party, one that is also fighting elections in the United States and fighting in China and other countries. Good, no problem. We're perfectly happy to accept it. Thank you. पिछली बार थी वो दिख नहीं रही, ये आपने कहा था उस टाइम, इस टाइम तो हो नहीं रहा है कुछ, और फिर चुनाव के बाद कहा भैया ये क्या हो गया। तो मैं आपके जो सवाल है मैं आपको रिमाइंड कर रहा हूं। देखिए, भारत जोड़ो यात्रा चल रहा है, इसमें हम एक मैसेज देने की कोशिश कर रहे हैं और हम इस मैसेज से डिस्ट्रैक्ट नहीं होना चाहते, मगर गुजरात का चुनाव, हिमाचल के चुनाव के बारे में हमारा डिस्कशन चलेगा। खारगे जी इज द प्रेसिडेंट ऑफ द पार्टी, ही विल डिसाइड हाउ आई एम टू बी यूटिलाइज्ड फ्रॉम कन्याकुमारी टू श्रीनगर, कश्मीर. These questions, I know you don't ask them maliciously, but these questions are designed to distract from the core idea of the yatra. They're designed to take the attention of people somewhere else, right? The lakhs of people who are coming in the yatra, they are demonstrating what being Indian means. They are demonstrating that being Indian means respecting other Indian people. Being Indian means being affectionate, being loving to other Indian people. And this is an extremely powerful thing. And it's a very humbling thing for me to see how wise the Indian people are. I cannot even explain to you how humbling it is for me. Asim, it stands for a certain vision of India. It stands for a certain perspective of where the country should go. If the Congress party defends that perspective, and if it fights for that perspective, it will naturally connect with the people. And I think that, so this is a good first step. But I think there is a lot of actively लड़ रही है, और गुजरात चुनाव को कांग्रेस पार्टी गुजरात में जीतेगी. बहुत भारी एंटी इनकम्बेंसी है, और जो आम आदमी पार्टी का है पूरा हवा में है, ग्राउंड पे कुछ नहीं है. आप मीडिया का मतलब वहां से वो
फंडिंग करते हैं, दिल्ली से एडवर्टाइजिंग करते हैं, तो हवा बना रखा है. बट कांग्रेस पार्टी इज ए सॉलिड पार्टी इन गुजरात. कांग्रेस पार्टी इज गोइंग टू विन द इलेक्शन. हाँ जी, नहीं सर. I don't want to politicize this incident. People have died here. It is disrespectful for them to politicize this incident, so I'm not going to do it. हाँ जी, विक्रांत जी. I have answered you clearly. विक्रांत जी. I'm not going to politicize. I'm not broken in any way. But it had a weaken. This is a good first step in connecting with the people. It is not a magic wand, but it's a good step. And to make every single person who comes to me, regardless of religion, regardless of community, regardless of how rich or poor he is, comfortable when they're walking in that yatra. That is the only thing I'm seeing right now. Once we arrive in Srinagar, which we will, then you're welcome to come to a press conference and ask me the question, how do I see myself after the yatra? Sir, yesterday's कल के इंसिडेंट में मौत Emotion which is very strong in the leadership of the RSS and in the leadership of the BJP. And that emotion at a superficial level is hatred. They preach the idea of hatred. But if you scratch a little bit, and I have read people like Savarkar, Gowalkar, if you scratch a little bit,